Friends, today in this video lesson we are going to study a very beautiful story, The Necklace. This story has been included in class 10th English CBSE and it has been written by the famous French writer Guy de Maupassant. So students, first of all we'll know about the writer himself, who is very famous in storytelling. When we talk about Guy de Maupassant, whose full name is Henri René Albert Guy de Maupassant. He was born on 5th of August 1850 and died on 6th of July 1883. And जैसा students आप देख पा रहे हैं that he lived his life only for 33 years. He was a 19th century French author and remembered as a master of short story form and also as a person or as a representative of the naturalist school. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि नेचुरलिस्ट स्कूल क्या होता है. तो नेचुरलिस्ट स्कूल के जो राइटर्स हैं, एक्चुअली स्कूल टर्म यूज़ किया जाता है फॉर दिस ग्रुप ऑफ राइटर्स हु बिलोंग टू द सिमिलर काइंड ऑफ थॉट्स. और ये जो नेचुरलिस्ट स्कूल हैं, these writers they depicted human lives and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms. यानी अक्सर ये पेसिमिस्टिक निराशावादी टर्म्स में ह्यूमन लाइफ्स को डिसइल्यूजन वे में, डिसअपॉइंटेड वे में रिप्रेजेंट करते थे. मतलब ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जिनके साथ कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ है. एंड दिस Guy de Maupassant, he is the most celebrated of French short story writer, the most famous one. And his brilliance of technique is combined with an ethical nihilism. Maupassant के बारे में ख़ास बात ये है that he is considered as the father of modern short story writer. And Leo Tolstoy, a famous writer, he has used Maupassant as a subject matter. उन्होंने एक वर्क लिखा था अपने आर्ट ऐसे ऑन आर्ट पर एंड उसमें उन्होंने एक वर्क लिखा था द वर्क्स ऑफ Guy de Maupassant. And Guy de Maupassant के बारे में one more thing that is very remarkable is that his stories are second only to Shakespeare in their inspiration of movie adaptation with films. सबसे ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़ जो भी इंग्लिश लिटरेचर की राइटर पर बनी है दैट इज़ शेक्सपियर. एंड उसके बाद अगर नेक्स्ट वन है दैट इज़ Guy de Maupassant, जिनकी शॉर्ट स्टोरीज पर बहुत सारे फिल्म अडेप्टेशंस हुए हैं. सो हियर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, the chapter sketch. It means we are going to see the chapter in brief. The necklace. It is a story of a middle class lady named Matilda. The necklace term, you know student, that this is a lace, this is a band that we wear around our necks. So ये जो necklace story है, it is a story of a middle class lady whose name is Matilda. She was born in a clerk family and was married to a clerk named M. Loisel. M इज अ फ्रेंच टर्म, मोसियर वर्ड के लिए ये यूज होती है. एंड इंग्लिश को अगर हम देखें तो मोसियर क्या होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू मिस्टर. सो एम कैन बी टर्म्ड एज मोसियर और मिस्टर. So this lady whose name was Matilda, she was born in a clerk family and also she got married with a clerk. Matilda was a very pretty young lady, but she was dissatisfied with the poverty of her family. The lady, she was very beautiful, but her look were against her social position and reputation because she belonged to a poor family. और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी. She was very dissatisfied also क्योंकि वो एक poor family से belong करती थी. She wanted to have the luxuries in her life. She believed that she is very pretty and that's why she should have all the luxuries. उसे वो जो इतनी सुंदर है तो सब luxuries जो life के comforts हैं वो उसके पास होने चाहिए. She hated her own humble surroundings and spent her time dreaming about a fancy and luxurious life. Humble mean very common, very simple. तो जो उसकी सराउंडिंग थी, उसका जो एटमोसफियर था, उसकी जो फैमिली थी, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड था, दैट वाज वेरी सिंपल एंड शी हेटेड दैट. एंड शी स्पेंट हर टाइम ड्रीमिंग अबाउट अ फैंसी मीन इमेजिनेटिव एंड लग्जरियस लाइफ के बारे में वो सोचती थी. एंड शी यूज टू स्पेंड हर टाइम लाइक दैट. Once what happened? She borrowed a necklace from her friend Ma'am Forestier and lost it in the ball. Ball is a dance party. Once she went to a dance party and there she wanted to look the most beautiful lady and also the most rich.
and that's why for that ball dance party she borrowed a necklace from her friend, that friend who was very rich, Ma'am Forestier, and she decided to replace it by a necklace that looked similar to it. But now when she had lost the necklace, तो वो decide करती है that she would replace that necklace that looked similar to it. उसके जैसे ही दिखने वाले वो नेकलेस से रिप्लेस करने का सोचती है. शी डिडंट हैव करेज कि वो अपनी फ्रेंड को जाकर बता दे कि इस तरह से उसने उसका नेकलेस खो दिया, एंड दैट्स वाई वो उस नेकलेस को रिप्लेस करने की कोशिश करती है. बट वॉट हैपन, इट कोस्ट हर अ फॉर्चून एंड दे हैड टू लिव इन अ मिजरेबल कंडीशन टू रीपे द लोन दे टुक टू बाय इट. वो जो न्यू नेकलेस था दैट वॉज वेरी मच एक्सपेंसिव एंड इट कोस्ट हर अ फॉर्चून. फॉर्चून मीन द प्रॉपर्टी दैट शी रिसीव्ड एज इनहेरिटेंस, हर हस्बैंड रिसीव्ड एज इनहेरिटेंस. अपनी विरासत में जो मिली थी वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी भी उन्हें देनी पड़ी, एंड ऑल्सो दे हैड टू लिव इन अ मिजरेबल कंडीशन सो दैट दे कुड पे द लोन दे टुक टू बाय इट. उस नेकलेस को खरीदने के लिए उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स, पूरी इनहेरिटेंस भी लगा दी, एंड साथ ही साथ उन्हें लोन लेना पड़ा, जिसकी वजह से दे हैड टू स्पेंड अ वेरी मिजरेबल लाइफ. It is a tale of how her desire to have more lead to her ruin. And this story tells us that when a person desires to achieve more and more, it ultimately leads her to her ruin, her destruction. And this happened with Matilda also. So students, these are the word meanings that have been included in your chapter. And on page number 39, we have petty, mean very small, incessantly, continuously. Tureen, tureen is a deep bowl with a cover used for serving soup. Exquisite mean finely made. Despair, a complete loss of hope. Elated, elated mean to be extremely joyful, very happy. Then on page number 40 we have spitefully. Spitefully mean hurtfully in an evil way. Then dismay. Dismay is a feeling of disappointment. On page number 41 we have the words like vexed. Vexed mean agitated or annoyed or frustrated or worried. And ecstatic, very happy. Page number 42 we have the word intoxicated, filled with something, or filled with, like we can say, some extreme passion. Saloon. Saloon is a room used for entertaining guests, like drawing room we can say. Modest, that is very simple, not expensive. And cloak. Cloak is a sleeveless garment that hangs loosely from shoulder. Page number 43 we have bewilderment. Bewilderment means shock or confusion. Chaplet is a string of diamonds. String एक तरह की डोरी होती है डायमंड्स की. Then azure mean money lender. Attic. Attic is a space or room inside the roof of a building. नॉर्मली हमारे घरों में भी होता है, बिल्डिंग की रूफ के अंदर जो एटिक्स बनाए जाते हैं. देन क्रूड. क्रूड मीन रफ और सिंपल. स्यू. स्यू मीन अ फ्रेंच कॉइन ऑफ लो वैल्यू. परसीव्ड, नोटिस्ड. पर्सोनेज मीन नेम. And here we are discussing the main themes. Actually we have discussed the chapter in very short, and we are discussing the main themes. Matilda Loisel and her unhappiness. Matilda, who is the heroine of the story. Matilda Loisel. She is very unhappy because she is a middle class lady and she desperately wished she were wealthy. I mean, every time, every moment she had only one wish, and that wish was that she would have been wealthy. She was very pretty and charming, but had the bad luck to be born into a family of clerks and married to another clerk, M. Loisel. Although she was very pretty, she was very beautiful, she was very attractive, but she considered it her bad luck कि उसका जो birth हुआ था that was in a clerk family, and the another bad luck was that she was also married to a clerk, M. Loisel, Monsieur Loisel. Her husband worked as a clerk in the office of the Board of Education. Matilda was simple, but she was unhappy. Although she was a simple girl, but she was not happy at all. She was all time unhappy. She was so convinced that she is meant to be rich that she detested her real life and spent all day dreaming and despairing about the fabulous life that she was not having. And now this lady, she was so convinced. उसे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि एज शी वॉज सो ब्यूटीफुल, तो वो
जो है रिच होनी ही चाहिए थी. एंड दिस कन्विक्शन वॉज सो मच लार्ज दैट शी डिटेस्टेड हर रियल लाइफ. वो अपनी रियल लाइफ को डिटेस्ट करती थी, हेट करती थी, एंड स्पेंट ऑल डे ड्रीमिंग एंड डिस्पेयरिंग अबाउट द फैबुलस लाइफ दैट शी वॉज नॉट हैविंग. पूरा पूरा दिन वो ड्रीम करती रहती थी एंड डिस्पेयर करती रहती थी, डिसअपॉइंटेड होती थी, निराश होती थी उस लाइफ के बारे में, उस रिच एंड लग्जरियस लाइफ के बारे में जो उसकी नहीं थी. One day, M. Loisel brought an invitation to a fancy ball organized by his boss, the Minister of Education. The next theme is M. Loisel brought an invitation. And what happens one day? That her husband, he brought an invitation to a fancy ball. Ball is a dance party, as I already told you, that had been arranged by his boss. And the boss is Minister of Education. M. Loisel thought that his wife would be delighted to read the invitation, but she was not delighted to see the invitation. Now that man thought कि उसकी वाइफ जो है शी वुड बी वेरी हैप्पी व्हेन शी हैव दिस इनविटेशन, कि एक अच्छी पर्सन, एक रिच पर्सन के यहाँ से इनविटेशन आया है, तो हस्बैंड को लगता है शायद उसकी वाइफ जो है शी विल बी वेरी हैप्पी, बट दैट लेडी शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई. And what was the reason behind her not being happy? She told her husband that she does not have a good dress to wear to that occasion and asked him to give the invitation to his friend. Now she told that there's no use of invitation क्योंकि उसके पास तो अच्छी ड्रेस ही नहीं थी उस ओकेज़न पर पहनने के लिए. एंड शी टोल्ड हर हस्बैंड कि वो जो इनविटेशन है वो अपने फ्रेंड को दे दे. हर हस्बैंड M. Loisel told her that she could buy a new dress. Now the husband tried to surrender. एंड ही टोल्ड हर हिज वाइफ दैट शी शुड बाय अ न्यू ड्रेस, कि तुम एक न्यू ड्रेस खरीद लो. ही हैड सेव्ड 400 francs टू बाय अ गन टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज. ही सेड दैट ही वुड गिव दैट मनी टू हर फॉर बाइंग अ न्यू ड्रेस. एंड उसने अपनी वाइफ को बताया दैट ही हैड सेव 400 francs. फ्रेंक्स इज़ द करेंसी ऑफ फ्रेंच. सो उसने जो सेव किए थे 400 francs, जिसकी हेल्प से वो ख़रीदना चाहता था एक गन, ताकि वो किसी हंटिंग पार्टी को ज्वाइन कर सके. बट द नाउ द हस्बैंड अग्रीड टू गिव दैट मनी टू हिज वाइफ सो दैट शी कुड बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी एंड बी हैप्पी. Matilda gets necklace from Madame Forestier. Matilda buys a new dress, but she was not happy again. And why she was not happy? Her husband asked the reason for her sadness. अभी न्यू ड्रेस खरीदने के बाद भी when the lady was not happy, then the husband asked what is the reason. She says that she would not go for the ball as she does not have jewelry to wear with the dress. Again there was a reason of dissatisfaction, and now she told that although she had purchased a new dress, but still वो पार्टी में नहीं जाएगी. And why she will not go? Because she did not have the matching jewelry to wear. Matilda gets necklace from Madame Forestier, and the husband replies that she should wear some natural flowers, but she was not convinced. हस्बैंड ने उसे बहुत परसुएट करने की कोशिश की दैट एज शी इज़ सो ब्यूटीफुल दैट एनीथिंग वुड लुक ब्यूटीफुल ऑन हर, और वो कुछ नेचुरल फ्लावर्स को एज ए ज्वेलरी यूज़ कर सकती है. बट दैट लेडी शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. देन ही एडवाइज्ड हर टू बोरो इट फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर. एंड नाउ द हस्बैंड एडवाइज्ड कि अगर उसे ज्वेलरी चाहिए एज दे कुड नॉट बाय द न्यू ज्वेलरी, सो शी कुड बोरो दैट थिंग फ्रॉम हर फ्रेंड हु इज़ वेरी रिच, मैडम फॉरेस्टियर. नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरोड अ नेकलेस फॉर द बॉल. अगले दिन उसने क्या किया? शी विजिटेड हर फ्रेंड्स हाउस एंड उसने एक नेकलेस बोरो कर लिया. Matilda at the day of ball. The night of the ball arrived. Now the decided day, the scheduled day of the party that arrived, and Matilda was very happy at the occasion. She looked very beautiful in the dress. Everyone liked her and she was absolutely thrilled because she was already pretty, and now when she was wearing a very pretty dress with a pretty jewelry, then everyone liked her so much and she was feeling very thrilled because this happened for the first time in her life that she was getting so much attention. Everyone wanted to talk to her because she was looking so much beautiful. She and her husband did not leave until 4 a.m. They both enjoyed the party too much, and it was 4 a.m. in the morning. Then they caught a cab and returned home. Finally, they hired a cab, a taxi, and they both returned home. The necklace was lost. When she returned home and was changing her dress, Matilda wanted to see her beauty in final view before the mirror. Now, before changing the dress, Matilda एक
लुक देखना चाहती थी अपने आप को मिरर के सामने, सो दैट शी कुड हैव अ फाइनल व्यू ऑफ हर ब्यूटी, एंड शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल दैट डे. Suddenly, she noticed that the necklace was not around her neck. She was shocked to see that her necklace had got lost. All of a sudden, when she looked herself in the mirror at that time, she realized that the necklace was not there. And now she was very much shocked, very much astonished to look that she had lost that necklace. She cried out and informed her husband that she had lost the necklace. Now it was a moment of panic. She at once informed her husband that the necklace had been lost. Her husband searched for the necklace on every place where they went last night. He went to the police and the cab offices. A thorough search was made because that necklace that was borrowed from the friend, and that's why सब जगह उसे search किया गया. Even they went to police station also, the cab office also. He also put an advertisement in the newspaper, but the necklace was not found. Necklace कहीं नहीं मिला. So he advised his wife to write a letter to her friend telling her that she needs some time to get the necklace repaired. अब फाइनली उसने अपनी वाइफ को एडवाइस किया कि वो अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखे जिसमें वो उसे बता दे कि उसे कुछ टाइम चाहिए, कि नेकलेस जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, उसे रिपेयर करवाने के लिए कुछ टाइम चाहिए. सो द इन द मीन टाइम दे वुड फाइंड द नेकलेस. At last, Matilda decides to replace the necklace with a necklace that looks similar to it. अभी फाइनली क्या हुआ, दैट टाइम ऑल्सो गॉट लॉस्ट एंड दे डिड नॉट फाइंड द नेकलेस. फाइनली मटिल्डा डिसाइड करती है दैट शी वुड चेंज और रिप्लेस द नेकलेस विद अ न्यू वन. एक ऐसा नेकलेस जो उसके जैसा लगता है वो उससे रिप्लेस करेगी. अभी जो न्यू नेकलेस था, it was a diamond necklace according to them, and that's why it had to be very expensive. Her husband gives her 1800 francs which his father had left for him. जो इनहेरिटेड जितनी भी मनी थी 18,000 नॉट 1800, वो सब मेटिल्डा के हस्बैंड ने उसे दे दिए जो मेटिल्डा के फादर इन लॉ ने छोड़े थे. He takes a loan of the remaining amount and purchased a diamond necklace for 36,000 francs. और नाउ व्हाट दे डिड कि उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स का एक नेकलेस खरीदा दैट हैड टू बी रिप्लेस्ड. एंड उस नेकलेस के लिए 18,000 फ्रैंक्स जो है दैट हैड बीन लेफ्ट बाय मेटिल्डाज फादर इन लॉ, एंड द रिमेनिंग 18,000 फ्रैंक्स वो उन्होंने लोन ले लिए. शी रिटर्न्स द नेकलेस टू हर फ्रेंड. बाइंग द नेकलेस बॉट द लॉयजल्स इन पोवर्टी, बट ड्यू टू दैट नेकलेस परचेजिंग दे बिकेम एक्सट्रीमली पुअर. अभी जितनी जो उनके पास सेविंग थी, इनहेरिटेड मनी थी, वो सब उन्होंने लॉस्ट कर दी. इवन दे वेंट इनटू अ लोन. दे लॉस्ट देयर हाउस, देयर मेड, देयर कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेटिल्डा लूजेस हर गुड लुक्स. नाउ एवरीथिंग वॉज लॉस्ट. उनका घर खो चुका था. दे हैड टू शिफ्ट टू अ वेरी स्मॉल हाउस. देयर मेड उनकी जा चुकी थी. देयर कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, वो जो कंफर्टेबली जी रहे थे वो भी उन्हें छोड़नी पड़ी. एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेटिल्डा लूजेज हर गुड लुक्स. एंड वाई? बिकॉज नाउ शी हैड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड शी हैड टू लिव इन अ पुअर एटमोसफियर, एंड दैट्स वाई उसकी गुड लुक्स भी जो थी वो खत्म हो गई उस लोन को पे करते करते. After 10 years, all the debts were finally paid. Finally, 10 years they had spent like that, and now they had paid all the debts that they took to purchase that loan. That necklace. पूरा का पूरा जो लोन था वो उन्होंने चुका दिया 10 years में. One day Matilda was walking in the Champs Glacis and saw Ma'am Forestier. एक दिन मेटिल्डा जो है वॉक कर रही थी चैम्प्स ग्लासेस में, एंड वहाँ उसने अपनी उसी पुरानी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर को देखा. शी वॉज लुकिंग चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल एज शी हैड लुक 10 years बिफोर. वो लेडी तो अभी भी उतनी ही चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लग रही थी जितनी वो 10 years पहले लगती थी. गुड लुक्स तो सिर्फ किसके खत्म हुए थे? मेटिल्डा के. नाउ दैट ऑल द डेट्स आर पेड ऑफ, मेटिल्डा डिसाइडेड टू टेल द स्टोरी टू मैम फॉरेस्टियर अबाउट हर नेकलेस. अब जब सारी डेट्स मेटिल्डा चुका चुकी थी, नाउ शी हैड द करेज कि अभी मैं उसे बता देती हूँ वो स्टोरी जो उसने पहले नहीं बताई थी. पहले उसने सिर्फ नेकलेस रिप्लेस किया था. शी डिडंट टेल हर फ्रेंड कि वो नेकलेस जो है रिप्लेस किया गया है. नाउ शी डिसाइडेड दैट उसे अपनी फ्रेंड को पूरी स्टोरी बता देनी चाहिए. एट दिस मैम फॉरेस्टियर इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज अ फेक नेकलेस एंड द कॉस्ट ऑफ इट वॉज ओनली 500 francs. उस टाइम जो है मैम फॉरेस्टियर ने उसे बताया दैट दिस नेकलेस वॉज नॉट रियल डायमंड.
इट वॉज अ फेक वन, एन आर्टिफिशियल वन, एंड इसकी कॉस्ट क्या थी? ओनली 500 फ्रैंक्स। अभी मैटिल्डा को बहुत बड़ा शॉक लगता है बिकॉज दैट नेकलेस दैट हैड रूइंड हिज हर लाइफ, दैट वाज ओनली 500 फ्रैंक्स, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया था, तो अगर वो बताती तो शायद उसे पता चल जाता, बट उसके बदले उसे 36,000 का नेकलेस दिया उसने, एंड दैट हैड रूइंड हर लाइफ completely thoroughly, not only her life but also her good looks. So students, the moral of the story is that we should always be satisfied with what we have. We should never desire for the luxuries and comforts that are not in our reach. हमें जो मिलता है, हमारे पास जो है, वो हमें जो है वो उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए. हमें कभी भी अननेसेसरी थिंग्स जो हमारे पास नहीं है उनकी विश करना एक अलग है, बट उनको ऑब्सेशन नहीं बना लेना चाहिए. So now the characters, Matilda Loisel, first of all, she's a pretty and charming lady, a complex and dynamic character because she is unhappy and unable to accept her life's condition, and she is a daydreamer. And then she gets married to a minor clerk. I'm Loisel, who is middle class. And she's selfish, spoiled, never does the housework, and 10 years later she becomes hardworking. And why she becomes hardworking? Because now she has to do all the household works, and she had changed her perception, and even her dress that was also like a peasant after 10 years. And Mr. Loisel, M. Loisel, Monsieur Loisel, he's a clerk for Ministry of Education. He's a middle class person. He's also static, not very dynamic or not very easy to go through person, married to Matilda, and he's a kind, generous, loyal, hardworking, unselfish, patient, loving, wants to please his wife. He has all those qualities. And Madame Forestier, the third character, she's a wealthy person. Also, she's trusting person because she lent her necklace to her friend. She's kind and generous as well. And moral of the story, that is, always be satisfied with what you have and do not wish for the unnecessary things. So students, I hope you have understood the chapter well, you have gone through the story, and you have also seen the tragic end of the story for which Guy de Maupassant, he is famous. So I hope you enjoyed the story. So keep learning students. Thank you.